तो गाइस आज हम आए हैं इधर खांडेपार केव्स के पास, जो आपने कभी देखा होगा। टूरिस्ट भी आते हैं इधर घूमने के लिए। फॉर माय कोंकणी व्यूवर्स, आम्ही आयज हांगा येयल्या खांडेपार केव्स, जे तुम्ही आयकले आसतले। तांकां खूब लोक पांडवा केव्स म्हणटा, तर ते पांडवा केव्स न्हू। तर आयज आमी पळोवया की हे केव्स बांदलेले कोणें। ही प्लेस जर तुम्ही विजीट केली जाल्यार तुमकां इजी आसा हे दिसपाक, रस्त्याच्या सायडीनूच दिसता। तर हे जे केव्स आसा ते लोकां मदीं एक मिस इन्फॉर्मेशन आसा की ते पांडवांनी बांदलेले। सो ते पांडवांनी बांदूना, तर ते कदंब राजा जे आशिल्ले फ्रॉम कदंबा डायनेस्टी फ्रॉम कर्नाटका, तर तेणी ते बांदलेले। आनी लोकां मदीं एक इन्फॉर्मेशन अशी आसा की पांडवांनी बांदलेली। सो हांगा तरी अशें कांय प्रूफ ना की पांडवा केव्स जे आसा, म्हणजे केव्स जे आसा ते पांडवांनी बांदल्या। तर आमी आतां पळोवया पांडवा केव्स। ते रेनी सिजनान ते भरलेले आसता उदक। सो आमी आतां पळोवया। हे जे केव्स आसा तेंचेर एक मेन जे प्रमाण अशें म्हणटा, जशें की आयदरे आयकलां की हो जो तुमकां मदीं हे दिसता कोरो दिसता, तो जो आसा कदंब राजांचो सिंबॉल अशें म्हणटा। पांडवा जे केव्स आसता ते आसात, पूण हांगा जे आसा ते पांडवांनी बांदूना अशें म्हणटा। जाल्यार तेंचो सिंबॉल जो आसा कोरो न्हू अशें म्हणटा। तर पळय सुंदर असो व्यू आसा हो। हांगा जे आसा गरमेच्या दिसांनी खूब अशे स्कुलांचे ट्रिपी जावं अशे स्कुलान कितें हायकाक आनी कितें कितें भुरगीं येता। सो भुरग्यांक हें दाखोवपाचें बी खूब म्हत्वाचें आसा की आमचे जे पयलूंचे जे स्ट्रक्चर्स आसा अशे बांदलेले, जे लोकांचे मदीं इन्फॉर्मेशन जे आसा ती पावपा जाय। तर तुमकां जे आतां हांवें केव्स दाखयले आनी तेंची ती इन्फॉर्मेशन दिली की कदंब राजांनी बांदलेले अशें आसा। तुमी आतां गुगल करून जर पळयत न्हू जाल्यार तेजेर दिसता की तेजेर दिसून येता बुद्धिस्ट मॉंक्स जे आशिल्ले तेणी जे आशिल्ले हांगसर यूज केले एज रेजिडेन्शियल सेल्स, अशे रावपाक लागून तेंका जागो आनी मेडिटेशनाक लागून जागो। आनी अशेंय म्हणटा की हांगा जे भितरचे स्ट्रक्चरल ते डिजायन्स पळयत जाल्यार ते अशें म्हणटा की कदंब राजांनी बांदलेले। सो अशे डिजायन जे कदंब डायनेस्टी तेणी जे बांदलेले, जे हांगाच न्हू अशे गोंयांचे भायर सुद्दां आसा। सो ते डिजायन हांगा मॅच जाता, म्हणजे तेणी ते अशे नेटार इंटरनेटार अशी इन्फॉर्मेशन दिल्या की कदंबा डायनेस्टी तेंचे आसपाक शकता अशें म्हणून दिलां। सो आर्किओलॉजिकल अशें हिस्टॉरिकल प्रूफ जे आसा ते ना अजून तरी। अशे लोक म्हणटा की हे पांडवा केव्स, पण पांडवा केव्स न्हू। एक तर ते बुद्धिस्टांनी यूज केल्ले, ते मॉंक्सांनी यूज केल्ले मेडिटेशनाक केव्स आसतले रेजिडेन्शियल अशें रावपा लागून तेंका सेल अशे मेडिटेशनाक, नाजाल्यार ते आसपाक शकता कदंब राजांनी बांदलेले, जे हांगसर अशे एक आपलो वजूद असो म्हणून लायक आमी आशिल्ले हांगसर अशें तशें आसपाक शकता, दाखोवपाक लागून की आमी हांगा येयल्ले अशें आसपाक शकता। आनी एक जे आसा तुमी वयर पळोवपाक शकता, एवरी हेजेर वयर जे सिलींग आसा तेजे वयर डोम अशें जशें देवळांनी आसता तशें टायप शेकिल्ले आसा, डोम आसता तशें आसा। सो एक्झॅक्टली बांदलेले कित्याक, कितें यूज ते कोणाक अजून तरी खबर ना। हितून जर आमी झूम करून पळयल्यार तितलें कळना, पूण एक रूम आसा असो भितर वयतगीर, आनी एक रुमांतल्यान आनी एक भितर एक रूम आसा, तितून वचपाक मेळटा। फर्स्ट आसा तितून शिवलिंगा आसा अशें भितर बारीक कितें दिसता। एवरी जे हे केव्स आसा तितून दोन दोन रूम आसा, लायक एक भितर सरलो मागीर तितूंतल्यान आनी एक दार आसा भितर वचपाक। ऐसा लग रहा है कि नदी का भरा हुआ पानी आया है, लेकिन ये पानी जो है नदी का नहीं है। तो ये इधर झरने हैं, बहुत सारे झरने हैं, इधर से पानी आ रहा है तो इधर ये पूरा भरा हुआ है। हो सकता है कि पहले भी ये इसी प्लानिंग से बनाए गए थे ताकि पानी भी इधर आता है तो इतना जो हाइट है इनका
ये आप देख सकते हैं हाइट कितनी है। जो ये जो रॉक जो कट किए थे तो इधर इतना जो डेप्थ वो रखा था, मतलब उनका लिमिट में ये डेप्थ रखे थे, तो हो सकता है इसी रीज़न की वजह से रखे थे ताकि पानी ना आ जाए अंदर। इसके सराउंडेड पूरा ऐसा पानी भरा है। ये पीछे की साइड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज हे जे हांव तुमकां दाखयता आतां फोटो व्हिडिओ, ते आसा फाटली सायड केवजांची। अशें आसपाक शकता की हे पयलीं अशेच डिजायनान बांदून काडलेले, कित्याक हांगासर जे आसा झरे फुटलेले आसा खूब, तर अशें प्लॅन करूनय केल्ले आसूं शकता हे सगळे। हे जे आसा झरे हांगसर आसा, तर अशें सगळे कॉर्नरांनी एवरी कॉर्नरांनी झरे आसा। तर तुमी पळोवपाक शकता हांगा हे फातरांतल्यान उदक येता। सो रिजन आसपाक शकता की हेजे अशें डेप्थ आसा, हेजे हायटी पळय बांदलेली आसा ती कळटाय पळय 2 फूट 1.5 फूट सुमार आसा। तो अशें दिसता की हे डिजायन तशेंच केल्ले, पावसान उदक जे आसा ते भरो जायना आनी भायल्यान जे तेका डेप्थ दवरला तितून सगळें भरलेलें आसा उदक। हो जो आसा हो व्यू आमी वयल्यान काडला, जाल्यार पळया केव्ज कशें दिसता ते वयल्यान। एक 2 फूट सुमार तरी मदींच हांगा उदक आसा आनी मदीं एक झरो आसा। तो हांव तुमकां दाखोवपाक शकपाना, म्हळ्यार दिसपाना तो। मदीं एक झरो आसा, खूब झरे आसा आनी अशें उदक व्हांवून वयता हांगसरल्यान। तो कंटिन्युअस ते व्हांवत आसा झरे, म्हण ते आमकां मदीं वचपाकूय मेळपाना। तर फ्रेंड्स, आमी जर हांगा गरमेच्या दिसांनी येयत न्हू जाल्यार आमकां हे सारकें पळोवपाक मेळटा। आनी भितर जे आसा केवजांनी वेगवेगळे जे डिजायन केल्या न्हू, व्हेरी डिफिकल्ट। म्हळ्यार आतां तरी इतले करपाक, तेन्नाच्या टायमार ते आनी बरे आसतले। पयलीं हे खूब वर्सां पयलींचे केव्ज, सो आमकां आतां पळोवपाक मेळना हांगसर, नाजाल्यार भितर व्हरोन दाखयतलो आशिल्लो कितें कितें आसा तें। सो हेजे वयर अशे डिजायन आसा, लोटसाचो डिजायन आसा आनी कशे कशे डिजायन आसा भितर, तुम्ही पळोवपाक शकता। हे 3 जे केव्ज आसा ते सेपरेट आसा, 2 जे आसा ते एकूच अटॅच आसा। एक सेपरेट त्या सायडीन आसा त्याच्या सायडीन, आनी एक जो आसा फ्रंट आसा, फ्रंट आसा तो एकूच वेगळो आसा। आनी हेंचे जे 3 केव्ज आसा तेजे मदीं आसा ती केव, तेजेर तो सिंबल आसा। सो तांबयो कसो दाखयला, कोरो टायप, आनी वयर नाल्ल आसला भशेन। सो ते नाल्ली कशें दिसता, वयर कितें लोटसाचोय कसो दिसता मातसो सिंबल। सो आतां तो तितले झाड जाले आनी तो कळना तेजेर कितें आसा तें। तो ये जो केव्स है, ये 3 जो रॉक कट केव्स है ना, जो एक केव्स है ये, मतलब एक जो है ये सामने है इसके, और बाकी जो ये 3 है ये एक ही साथ में एक लाइन में है, और ये जो है अलग से बना है सामने। तो इसके ऊपर और एक कुछ सिंबल है, जो एक सिंबल जो हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर अभी पौधे हुए हैं तो क्लियरली नहीं दिख रहा है। और इसके अंदर जो है अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि पानी है, तो इधर अंदर बहुत कुछ देखने लायक बहुत है। शिवलिंग है और ऊपर जो सीलिंग पे डिज़ाइन है वो भी अच्छा है। तो अभी आपको मैं दिखा नहीं सकता कि वो सीलिंग पे डिज़ाइन कौन सा है। तर फ्रेंड्स, आता आम्ही मेळया एक नवे व्हिडिओन एक नवे प्लेसीर।